સુમૈયા મેમ છે, શહેનાજ મેમ જે હંમેશા અમારા માર્ગદર્શક રહ્યા. જો બધા વિશે કહેવા કદાચ બેસીશ તો સમય મર્યાદા ઓળંગી જવાશે, પણ હા ભવિષ્યમાં એટલું જરૂર કહી શકું કે પીમેટ વિશે મારા ભવિષ્યમાં એક પુસ્તક લખવાનો ઈરાદો જરૂર છે મારો. બીજી એક વસ્તુ, જો મારા અનુભવ આજે પીવામાં તાલીમ લઈ રહ્યો છું ત્યારે મને પીમેટ ખૂબ જ યાદ આવે છે. ખાસ કરીને જમતી વખતે જમવા માટે કેવી રીતે પલખા મારવા પડે છે, રખવું ને રજડવું પડે છે, આ દુકાનથી પેલી દુકાન, આ હાટડીથી પેલી હાટડી, આ લારીથી પેલી લારી, ત્યારે પીમેટ ખૂબ યાદ આવે છે. અને ખાસ કરીને જાવેદભાઈ હોય તો પીમેટની રવિવારની જે બિરયાની છે એનો વિચાર મને અમદાવાદમાં નહીં મળે. પીમેટની જે બિરયાની છે, કદાચ હું આઈએસ કરું ત્યારે સરકારને ભલામણ કરીશ કે પીમેટની બિરયાનીને જીઆઈ ટેગ આપી દે. આવા તો અનેક વાત છે, પણ સમયની મર્યાદા છે એટલે મારી વક્તવ્યને બાંધું છું હું. આ પીમેટનો જે તમે લોગો જોશો, આના જે 1985માં જે સંસ્થાપકો તો પીમેટનું નામ તો પાડ્યું હતું પ્રોગ્રેસિવ મુસ્લિમ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, પણ મારા જીવનના સર્વાંગી વિકાસમાં, મારા શિક્ષણમાં જે પીમેટની ભૂમિકા છે એના માટે પીમેટનું મેં બી નવું નામ પાડ્યું છે. ફોર મી પીમેટ ઇઝ પ્રેસિયસ મેન્ટર ફોર માય એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ. એટલું જ નહીં, આ પીમેટની જે તમે ટેગલાઇન છે એજ્યુકેશન ઇઝ લાઇફ, એ ખૂબ જ ચોટદાર અને મારા મગજ પર અમિટ છાપ છોડી દેવી છે. મારા એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા અજ્ઞાનરૂપી અને અંધકારના જીવનમાં અજ્ઞાનરૂપી પ્રકાશનું જે પ્રજ્વલિતનું કામ કર્યું છે પીમેટે, ખૂબ જ હું એનો ઋણી છું, આખી જિંદગીનો ઋણી રહીશ. જતા જતા સમયના અભાવે 4 લાઈનમાં મારી વાતની સમાપ્ત કરું છું કે ઘર મુझे इश्क का अरमान होता तो घर मेरा मीर का दीवान होता, घर मुझे इश्क का अरमान होता तो घर मेरा मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आके सोचते हैं हम, अगर ना आता तो बड़ा नुकसान होगा. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન યુપીએસસી ના વિદ્યાર્થી મિત્રોને. યુપીએસસી માં અત્રે સંસ્થામાં રહીને અભ્યાસ કરતા 2 વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓનું સિલેક્શન સ્પીપામાં થયું છે તેવા 2 વિદ્યાર્થીઓને હું સ્ટેજ પર બોલાવીશ. ઝહીર અંસારી અને મલિક નવાઝ, આ બંનેના સન્માન માટે હું શાહિદ અખ્તર સાહેબને વિનંતી કરીશ, જેઓ આઈઆરએસ ઓફિસર છે. એમને વિનંતી કરીશ આપણે એમને તાળીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ, સ્ટેજ પર બોલાવીએ. અને અમદાવાદમાં અત્યારે ઇન્કમ ટેક્સ કમિશનર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે એવા શાહિદ અખ્તર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વધાવીએ વિદ્યાર્થીઓને. શાહિદ અખ્તર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાના ઇન્સ્પિરેશનલ સેન્ટેન્સીસ વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ રજૂ કરે. अस्सलाम वालेकुम. मुझे नहीं मालूम कि ऐसे मौके पर मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन तकरीबन 1 महीने पहले प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट जिससे मेरा तारुफ हुआ, आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, और मोहम्मद पटेल साहब ने इसमें पहल ली और उन्होंने मुझे बुलाया. और शायद 1 महीने हुए होंगे कि आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू गो टू दैट हॉल एंड मीट सम ऑफ द स्टूडेंट्स. और अभी जो इन स्टूडेंट्स के मैंने जो प्रोग्राम देखे, स्पेशली जो मैंने चाय पे चर्चा देखी, लेट मी से दैट इट वाज अ वेरी हाई लेवल. हम जब पढ़ रहे थे या आज भी जो मैं हूँ, लेट मी अश्योर यू चिल्ड्रन कि उस लेवल की डिस्कशन मैं नहीं कर सकता. और आप लोग बहुत सही हाथों में हैं, आपको बहुत सही तरबियत मिल रही है. एंड जितने तारीफ के लायक ये ट्रस्टीज हैं और ये ट्रस्ट है, उतने ही आप भी उस तारीफ के लायक हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं. और हमारी दुआ है कि हर कामयाबी आपकी कदम चुमे.
With this, I would like to say a few things which come from my own personal background, because they say कि एक तो साइंस में है कि it is a multiverse, it is not universe. Similarly, it is also we should admit कि हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है. We have got our old world view, old thought process, and it has nothing to do with what is right, what is absolute truth. It is about living your life and to take the things forward, because एक पूरी जिंदगी ही नाम है एक तरह के प्रोग्रेस का. So in that context, I would say that knowledge is power, and अल्लाह ने ये समाज जैसे भी बनाई हो, कुरान में और इस्लाम में जो भी चीज़ें बताई गई हो, but the fact remains के the world, the society will always be stratified. There will be layers. कुछ लोग उसमें नीचे होंगे, कुछ लोग उसमें ऊपर होंगे, और इंसान होने के नाते हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम भी अपने आप को बढ़ाकर ऊपर की तरफ ले जाएं. इसमें अब ढेर सारी चीजें हैं. एक है कि हमारे पास दौलत हो, जब दौलत होती है तो कामयाबी आती है. एक हो कि हम जिस फील्ड में हो हम बहुत ही अच्छे हों. If I am a footballer, I am a great footballer. If I am a cricketer, I am a great cricketer. I am playing for my country. I get paid a lot, not only as my match fee, but also as a fee from advertisement and other things, fees for sponsorship. लेकिन let me tell you that समाज में ऊपर उठने का सबसे आसान तरीका is education. सबसे बड़ी बात यह है कि it is available all over. हमारे मोहल्ले में स्कूल हैं, हमारे शहरों में स्कूल हैं, शहर के बाहर स्कूलें हैं. And then by and large in India and most of the world, these educations are universal. In India, every parent is required to send his child, whether a boy or a girl, to the school up to the age of 14. तो ये यूनिवर्सल एजुकेशन में जब हमारे अच्छे टीचर मिल जाते हैं, जब हमारे पेरेंट्स थोड़ी बहुत हमें बताते रहते हैं, कोई हमें ऐसा टीचर या कोई साथी मिल जाता है जो हमें कहता है कि ये चीज़ अच्छा है, इसको कर लो, ये किताब अच्छी है, ये पढ़ लो, ये सब्जेक्ट अच्छा है, यू डू इट, इट हैज़ गॉट सर्टेन स्कोप. तो ये सब चीज़ें अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे काम में आती हैं और हम फिर अच्छा कर सकते हैं. हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बने. उसी तरह से किसी भी सिस्टम में, किसी भी गवर्नमेंट में जितने भी सरकारी मुलाजमत हैं, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स, वो सब चीज़ों के रास्ते हमारे खुल जाते हैं. And one of the best example is the civil services. The qualification is you have to be graduate. Graduate in any subject. You need not be honors. Even the pass course graduate is qualified to appear for this exam. They are not looking for some kind of a super intelligence. बहुत ही एवरेज बच्चे, कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आम जितने भी अफसरान हैं, they are very very common people with a very average intelligence. फर्क क्या है कि शायद उन्हें किसी ने वक्त पे गाइड कर दिया. जब वो शायद ग्रेजुएशन कर रहे थे तो टीचर ने कह दिया कि मिस्टर सो एंड सो यू कैन डू इट, व्हाई डोंट यू ट्राई इट. ये सिंगल 3-4 लफ्ज जो है हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं. और अगर हमें हिदायत मिली हुई है, हमने अपने कानों और आंखों को खुला रखा हुआ है, तो हम उस पर चल पड़ते हैं एंड हम मेहनत करते हैं, सही जगह पे जाते हैं और हमें कामयाबी मिल जाती है. Another thing I would like to share is that the concept of equality, which is enshrined in our constitutions, especially when we come to that Muslim community, हम समझते हैं कि शायद हमारे साथ कुछ पक्षपात हो रहा है, कुछ हमारे साथ तासुब है, कुछ शायद गवर्नमेंट की मशीनरी ऐसी है कि हमें सिलेक्ट नहीं करती है. Let me assure you from this platform कि when you appear for the interview, you appear for the exam, आपको जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि you are being differentiated. There is certain post which doesn't want to select you. मेरा अपना यूपीएससी का एक्सपीरियंस ये है कि I found the board very very encouraging. जो सवाल के जवाब मुझे नहीं आते थे, मैंने कह दिया I don't know. Immediately they will move to easier questions. And let me assure you कि जितने भी जो इंटरव्यू बोर्ड होते हैं, 8 या 9 इंटरव्यू बोर्ड होती है, साइमल्टेनियसली लगभग 1 महीने तक इंटरव्यू चलती है. They are very very encouraging for all the students in general
दे आर सो वेल अवेयर पीपल, दे वांट दैट द गवर्नमेंट में सबकी एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और कोई ताज्जुब नहीं है कि शायद मैं बिलो एवरेज हूं और इंटरव्यू बोर्ड ने स्लाइड समझा होगा, हियर इज द मुस्लिम कैंडिडेट, लेट अस टेक इट। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट, यू नेवर नो व्हाट हैपेंड। तो मैं जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आई एश्योर यू दैट यू विल बी गेटिंग ऑल हेल्प। आप इंटरव्यू में जब रिटन एग्जाम देते हैं तो उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इंटरव्यू में बैठते हैं, यू विल फाइंड द इंटरव्यू बोर्ड वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ यू and they will ask all the questions that makes you comfortable. The idea is कि how much originally you have to think. जो भी आपने पढ़ा है, as the Vijayata madam said that whatever we have learned, whether we know to apply it or not. So what makes a person great in any field, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बीकॉम हो या हम ना हो, क्या हमने जो चीजें सीखी हैं उसको हम रोजमर्रे की जिंदगी में अप्लाई करते ही नहीं करते हैं। इसमें I just want to share an example from a book. That book says that in a US university, they taught about all that LCM, local common multiplier, then HCF, highest common factor. तो देखिएगा कि ये सब चीजें काम आती है जब हम लोग कोई कतार बनाते हैं, like army has to fall in line. इतने कॉलम होंगे, इतने रोज होंगे. So these are all problems of that LCM and HCF. तो उन मैथमेटिक्स ग्रेजुएट बच्चों को जब कहा गया कि आपको ये पौधे लगाने हैं और इस पौधे को आपको इस एरिया में लगाना है, दैट ऑथर सेज कि none of the students was able to plant the trees in that particular line, so number of columns and so number of rows. It was simply a problem of LCM and HCF, which probably we are taught in class 4. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम कभी निगेटिव न सोचें। There is a study that negative is very natural to human being. Probably वो हमारे जीन्स में है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा आगे सोचना चाहिए और हमें अपने काबिलियत पे भरोसा रखना चाहिए। ऐसे कि अगर आप अज़्म कर लें कि